welcome. You're watching Last Tick, a show where we recap for you the entire market's trading action of the day, as well as we share with you what are the factors that you need to keep on your watch in the days to come and in the trading days to follow as well. Let's quickly take a look at how the markets really closed in today's trading session. Remember, we had opened up in the green, 0.5% up, in tandem with the clues that we were getting from Singaporean Nifty index. But if you see towards the close of the session, it has actually paired most of the gains that it had garnered in the early trade. It has actually closed absolutely flat when you talk about the benchmark indices, the Sensex and the Nifty, 0.01% uptick. So it's just managed to save its blushes by ending in the green today, as well as when you talk about the Nifty 50, it's ended at 0.22% gains. That's 32 points addition for the Nifty 50. It has protected the 14,700 level for sure, but for the Sensex, it's not been able to inch up above the 50,000 mark. It has given up that and could not actually. The bulls tried to regain that mark early in the trade, but actually throughout the trading session, we could not see that getting successful. Although if you notice, the whole trading session has been marred by a whole lot of volatility today. It was an extremely choppy session, and the volatility may actually continue to rise as in when we approach the F&O expiry later this week as well. When you talk about the Nifty Bank, that's been the index that has pulled down most of the gains for the indices that they had gained in the early part of the day. 0.5% loss for the Nifty Bank index. Remember, it's closed very closer to the 35,000 mark as well. So remember, it has come down from 37,000, come down from 36,000, and now it's almost closer to the 35,000 mark. So most of the profit booking is happening in this space. Although the outperformance did, we actually saw the outperformance in the mid-cap index, 19,960. That was the level at which BSE mid-cap really shut shop, up 1% in trade. Also, the BSE small cap index gained about 0.8% in trade today, 19,806. That was the level of the BSE small cap in today's trading session. It was indeed an up day, so we are actually happy about that. 5 days of consolidation was followed by a little bit of green that we actually saw in the trade today. So it actually indicates that the bulls are not ready to give up just as yet. It was a bit of a breather that the markets really took in these last 3 to 4 trading sessions. We have already seen the Nifty lose up about 4% in these last 5 trading sessions. Almost 5 lakh crore rupees of wealth also getting destroyed of the investors. But if you see the underlying trend, still suggests to you that the bulls are not giving up just as yet. Moving on to see the sectoral moves for today. अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर इंडाइसेस जो हैं वो हरे निशान में आज बंद हुई हैं. सबसे ज्यादा इंडेक्स जो चढ़ा है वो आज के सेशन में मेटल इंडेक्स है. करीब 4% तक का स्ट्रॉन्ग मूव मेटल इंडेक्स ने दिखाया है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में, जबकि ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड मार्केट्स में सेल ऑफ रहा. मेटल इंडेक्स डेफिनेटली अपने आप को आउटशाइन करते हुए नजर आए और आउटशाइनिंग आज भी कंटिन्यूड रही है. अगर आप बात करेंगे कुछ ऐसे नाम जैसे कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील, इन सभी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी और आज के सेशन में भी ये इंडेक्स डेफिनेटली अपने आप को सबसे ऊपर उभरते हुए नजर आई है. रियल्टी इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 3% तक के आसपास का अप मूव देखने को मिला है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सेशन. इट कंटिन्यूअसली बिल्ट अप द गेन्स दैट इट हैड बिल्ट अप इन द अर्ली days move as well. Now moving on to find out how were the indices performance when I talk about the autos, the IT, the FMCG index, all of them also ended up in the green. Those are the top gainers in front of you on your screen. So a whole lot of companies from the Tata pack up in the green. Tata Steel, the top gainer for the Nifty today, and a sharp move over there for 7.5% up. Also Tata Motors, Hindalco, ONGC, all of them actually towards the last 1 hour of trade, they have pulled up more gains and they have closed at their high points today. You talk about Hindalco, 5.5% up in that trade. Also ONGC, although it was up about 7.5% at one point of the time in the day. Slight bit of profit taking after the sharp run up today, but you can still see that the trend is quite bullish. UPL is also up by 5% in today's trading session. Tata Motors definitely outshining and outperforming the auto index for sure, because that index was not performing that well today. Let's move on to see how are the laggards placed. Now, most of the names over here are from the banking sphere. You talk about Kotak Mahindra Bank, sharp decline of 4% over here. Also, अगर आप देखेंगे कि अदानी पोर्ट्स में जो वीकनेस देखने को मिली है वो लगातार दूसरे दिन देखने
देखने को मिली है, मारुति, बजाज ऑटो, डिविस लेबोरेटरीज, इन सभी में आज वीक ट्रेंड देखने को मिला। 1 से 1.5% तक की वीकनेस जो है इन सभी स्टॉक्स में आज के सेशन में हमें देखने को मिली है। और काफी सारे फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स को आज पुल डाउन करते हुए नजर आए। ना ही केवल जो सेंटिमेंट डैम्पनर न्यूज है, कोविड केसेस के बढ़त की जो खबरें आ रही हैं डोमेस्टिकली, ये पीछे के एक फैक्टर्स थे। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, एफआईआई फ्लोज। अगर आप कल की ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 1800 करोड़ तक के जो एफआईआई इनफ्लोज में जो सेलिंग हुई है, उसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट्स को एक ये जो डैम्पनर है वो देखने को मिला। आगे जाते हुए कई सारे फैक्टर्स और भी होंगे जो आपको देखने हैं, जैसे कि एफएनओ एक्सपायरी आने वाली है फरवरी 25 को, तो उसके पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन आपको मैक्रो फैक्टर्स पर भी इसी हफ्ते में नजर रखनी होगी, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में हम Q3 जीडीपी डेटा भी देखेंगे, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल जो बिल्टअप होना होता है वो जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो इंडिकेशंस ये बताएंगे कि मार्केट्स में जो अंडरलाइन रिकवरी है फ्रॉम कोविड पैंडेमिक वो हो रही है या नहीं। तो ये सभी फैक्टर्स बहुत ही की होंगे वॉच आउट करने के लिए। हाँ, आईपीओ स्पेस में काफी बज नजर आ रहा है, ये भी देख लीजिए। हैरनबा जो इंडस्ट्रीज का आईपीओ है ये आज खुल गया है, और अगर आप देखेंगे तो 66% ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है आज पहले दिन भी, और 2 और दिनों के लिए यानी कि 25 फरवरी तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। 625 करोड़ रुपए तक के आसपास का ये आईपीओ है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये केमिकल एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी निकाली है। उन सभी को जानने के लिए आप money9.com पर लॉग इन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या इस आईपीओ में आपको अच्छे मौके ढूंढने चाहिए या नहीं, या सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। इन सभी पर आप अपनी नजर भी रख सकते हैं। इसके ऊपर की सारी अपडेट्स जो होंगी कल और परसों की भी, वो भी हम आपको बताते रहेंगे लगातार। चलिए इसी के साथ इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन Money9 पर एक्शन जारी रहेगा, भले ही वो मार्केट कवरेज के बारे में हो या फिर पर्सनल फाइनेंस स्पेस पे भी हो। इन सभी पर आपको चर्चा के लिए सुनते रहना है और देखते रहना है Money9।